लिडू में 1 महीने से 2 बच्चों की मां लापता। जरूरी दस्तावेज और कपड़े साथ लेकर हुई गायब। কি হ'ল মানে মই তো কামৰ পৰা শুই আছিলোঁ, এজনী মুছলিম মানুহ আমাৰ ঘৰত বহি আছিলোঁ বহুত দেৰি, ঠিক আছে। তাৰপৰা মইতো অলপ খাই আছিলোঁ, কামৰ পৰা মদ খাব লাগে ন, অলপ খাই আছিলোঁ, শুই আছিলোঁ। তাৰপৰা মানুহজনী আমাৰ ঘৰত বহুত দেৰি বহিলে মইতো শুই আছোঁ। তাৰপৰা ইণ্ডাষ্ট্ৰীত যোৱাৰ আগত মাইকী মানুহজনী ঘৰৰ পৰা নাইকিয়া গ'ল। আগত মানে মোৰ 2জনী ছোৱালী মামা ঘৰত পঠালে, তাৰপৰা মাইকী মানুহ জল, তাৰপৰা মোৰ মানুহজনী পিছত ওলালে, মানে থাৰ্ডত ওলালে। তাৰপিছত মই টোপনি ভাঙিলে, মই ওলালোঁ ঘৰৰ পৰা। ওলাই মই বিচাৰি ফুৰিছোঁ, তেতিয়া গাড়ী গুচি গ'ল। মই বিচাৰি ফুৰিছোঁ, কামত গৈছিলোঁ, কামত সুধিলোঁ, কৈছে ইয়াত গৈ আহি পোৱা নাই বুলি ক'লে। তাৰপৰা মই মোৰ নিজৰ যি ৰিলেটিভ আছে মই সুধিছোঁ যে এনেকৈ আহিলে নেকি, মৰিলে খবৰ পালোঁ, আহি পোৱা নাই বুলি ক'লে। তাৰপৰা মই থানাত গৈছিলোঁ, আমাৰ লিডু আৰক্ষী থানাত গৈছিলোঁ, ৰিপৰ্ট দিলোঁ। মই 3-4 বাৰ গ'লোঁ। তাৰপৰা ক'লে যে মোবাইল আছে নি, মোবাইল নম্বৰ দিলোঁ, তাৰ ফটো দিলোঁ। তো মোবাইল চুইচ অফ আছে, তেনেকৈ মোবাইল চুইচ অফ আছে। ক'লে মোবাইল চুইচ অন হ'লে আমি কিবা কৰিব পাৰিম, মোবাইল চুইচ অন হোৱা নাই। মই মোটামুটি 3-4 বাৰ গ'লোঁ তাত লাগে। তাৰপৰা এতিয়ালৈকে মই আৰু কি কৰে, এতিয়া আপোনালোকে মাতিলোঁ, আপুনি কিবা এটা কৰিব পালে মোৰ ধন্যবাদ হ'ব। কোনোবা যদি কিবা ৰিপৰ্ট পালে তো ভালে হ'ব। কোনোবাই যদি দেখা পায় আপোনাৰ কিবা যোগাযোগ নম্বৰ হেৰি আছে, নম্বৰ কি মা মোৰ নম্বৰটো দিছোঁ, সেইটো নম্বৰ লৈ গ'ল 7099201688, এইটো মোৰ নম্বৰ হয়। আর মোর যদি ঘর মোবাইল আছে, মোবাইল লৈ গ'ল ঘৰৰ পৰা আহি। তাৰপৰা ডকুমেণ্টছ পূৰা লৈ গ'ল, কাপোৰ 3-4 যোৰ কাপোৰ ঘৰৰ পৰা লৈ গ'ল। এতিয়ালৈকে মই বিচাৰি পোৱা নাই। মানে ক'ত গৈছে বুলি সন্দেহ কৰিছে আপুনি? মই ক'ত সন্দেহ কৰা নাই, যোনটো মানুহজনে আছিলে মানুহজনী তাক সুধিলোঁ। তো মানুহজনী সুধিব গ'লে মানুহজনী হাঁহি আছে, কৈছে কি পলাই গ'ল নেকি। মই তাক সুধিব যোৱা নাই পলাই গ'ল নেকি, সুধিব কৈছে যে আপুনি মুখত আহিছিল যে মানুহজনী ক'ত গ'ল। মানুহজনী হাঁহি দিলে, বোলে কিয় আপোনাৰ মানুহজনী পলাই গ'ল নেকি। মই মই সোধা নাই যে পলাই গ'ল নেকি, ই এনেকৈ হাঁহি দিলে যে আপোনাৰ मांगे मन पला गल नहीं। मैं तक कल आप तो मैंने मैं हिंदी तो हुदल आपको तो हम नहीं बोला भाग्य नहीं क्या। आपको हम पूछे जे हमारा बीबी आपके घर में रहा, कहाँ गया हमारा बीबी जब से हमारे घर में रहा। हाँ ये हाँ ही दिसे मैगी मांडो ये जो अपना असम के तिनसुकिया जिले के लिडू क्षेत्र से एक विवाहित महिला के लापता होने की घटना ने इलाके में चिंता और चर्चा का माहौल पैदा कर दिया है। जानकारी के अनुसार लिडू नगर निवासी बापी देवनाथ की पत्नी आशा देवनाथ बीते 30 अप्रैल से लापता है। परिजनों के मुताबिक 30 अप्रैल की शाम बापी देवनाथ काम से घर लौटकर आराम कर रहे थे। इसी दौरान आशा देवनाथ घर से बाहर निकली और उसके बाद से उनका कोई पता नहीं चल पाया है। परिवार ने रिश्तेदारों, परिचितों और संभावित स्थानों पर काफी खोजबीन की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिलने पर मामले की सूचना लिडू पुलिस चौकी में दी गई। परिजनों का कहना है कि लापता महिला अपने कुछ जरूरी दस्तावेज और कपड़े भी साथ लेकर गई थी। 1 महीने से अधिक समय बीत जाने के बावजूद महिला का कोई सुराग नहीं मिलने से परिवार बेहद चिंतित है। महिला के पति ने आम जनता से अपील की है कि यदि किसी को आशा देवनाथ के संबंध में कोई जानकारी मिले तो मोबाइल नंबर 7099201688 पर संपर्क करें या नजदीकी पुलिस स्टेशन को सूचित करें। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और महिला की तलाश जारी है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट एनी टाइम्स 24/7।